What's up people, it's me फरबी और आज हम खेलने जा रहे हैं दी स्टैनली पेरेबल। तो जब मैंने YouTube पे सर्च मारा टॉप 10 स्टोरी ड्रिवन गेम्स तो द स्टैनली पेरेबल 6 नंबर पे आई प्लस। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर गेम है और चॉइस बेस्ड गेम होने वाली है, तो मुझे लगा दिस इज द गेम आई वांट टू प्ले। तो बिना किसी और जानकारी के, क्योंकि है ही नहीं और कोई जानकारी, इस गेम को शुरू करते हैं। So end is never the end is never the end. This is the story This of a was man good. This named was Stanley. end is never the end. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day, of every month, of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay, तो चलते हैं. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. तो असल में क्या है, स्टैनली नाम का बंदा और उसका पूरे दिन का काम यही होता है कि इसको सामने मॉनिटर पे इसको कुछ करैक्टर लिखा हुआ था और कीबोर्ड में प्रेस करना होता है. पहली बात तो इतनी आसान और इतनी यूजफुल जॉब किसकी कैसे हो सकती है. इतनी यूजफुल जॉब है इसकी और इसको एक दिन इंस्ट्रक्शन नहीं आया कि कौन सा बटन दबाना है. शायद उन्होंने ऑटोमेट कर दिया होगा वो टास्क, काफ़ी देर से समझ आया होगा. लेकिन इसके साथ ही लोग कहाँ पे गए. ऑफिस खाली खाली लग रहा है यार बिल्कुल. ओके ओके, सब खाली है, कॉफ़ी पड़ी है. ओके, गेट खुलता है क्या. शीशे भी नहीं टूटते यार इस गेम में. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. तो जैसा मेरे को समरी में पता ही चल गया था इसके बारे में कि चॉइस बेस्ड गेम होने वाली है. लेकिन चॉइस तो है हमारे पास, लेकिन इसने चॉइस दे के हमें क्या, ही एंटर द डोर ऑन द लेफ्ट. ये क्या बात हुई. चलो चलते हैं, शायद लेफ्ट में कुछ इंटरेस्टिंग होगा. जब तक Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Rip Franz, rest in peace. मेन बात है, चलो 2 डोर तो उन्होंने दिखा दिए चॉइसेस, लेकिन बोल भी दिया कि लेफ्ट वाले दरवाजे में जाना है. जब तक सामने एक डोर हो तब तक ठीक है. चलो और कोई रास्ता नहीं है. आई एम यूजिंग स्लाइड्स टू एश्योर एम्प्लॉयज दैट एवरीथिंग इज ओके. एवरीवन इज यूनिक, यू मोस्ट ऑफ ऑल. और इतने ही ज़्यादा मोनोटोनस कैरेक्टर्स दिखा रखे हैं इस स्लाइड में. नंबर ऑफ स्लाइड्स ऑन दिस स्लाइड, चार्ट्स, स्लाइड्स, व्हाट द फक. इसको बाद में देखेंगे हम. पहली बात तो ये स्लाइड कौन चेंज कर रहा है जब कोई है ही नहीं. तो Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay, मुझे लगा यहाँ पे चॉइस है मेरे पास ऊपर जाने की या नीचे जाने की, लेकिन बोल दिया इसने आते ही, बोल दिया कि ऊपर ही जाना है भैया, ऊपर जाओ. ठीक है, जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं. बॉस का ऑफिस, अरे बाथरूम है ये तो. ओके, नो नॉकिंग. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this.
तो हमें स्टैनली ने जाके बॉस के पीछे देख भी लिया कि वहाँ पे है 2845, वहाँ पे नंबर लिखा हुआ है इसका पासवर्ड। लेकिन मेन बात है बॉस के कमरे में है और बॉस ही नहीं है, ठीक है। और Stanley सबसे just sat पहली around twiddling his चीज, thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. भाई साहब हम गेम खेल रहे हैं, गेम हमको खेल रही है, बात ही नहीं करने दे रहे यार ये तो। Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped Secret into the room. newly opened passageway. यहाँ तक ठीक है, कोई चॉइस नहीं थी, लाल बटन एक ही दिख रहा था मुझे। Descending मुझे deeper into the लोडिंग देख के building, याद आ रहा है, Stanley realized he felt And a is bit never the end. peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. yes, Stanley is a thinker. I like about it. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control माइंड Facility. कंट्रोल फैसिलिटी। तो स्टैनली एक आईटी कंपनी का वर्कर है, लेकिन आईटी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज का माइंड कंट्रोल हो रहा है, या फिर ये माइंड कंट्रोल फैसिलिटी के लिए काम करता है। नहीं, ये सीक्रेट रूम से आया तो भी इसने डिस्कवर करी है कि यहाँ पे एक माइंड कंट्रोल फैसिलिटी है, और हम ही तो स्टैनली प्ले कर रहे हैं, तो हमने अभी डिस्कवर किया यार हमारा तो यार अब तक माइंड कंट्रोल हो रहा था। तभी वो स्टूपिड सा जॉब थी यार, क्या कीबोर्ड में एक एक बटन दबा रहे जो सामने दिख रहा, स्टूपिड टास्क। ओके, यहाँ पे और कोई चॉइस तो मुझे दिख नहीं रही है, जिसने भी इसके रिव्यू में लिखा था कि ये चॉइस बेस्ड गेम है। The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? और मुझे लग रहा है ये कुछ कूल होने वाला है यहाँ पे। ओके, सीसीटीवी कैमरा। Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Man. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. इस यूनिवर्स में, इस गेम में फ्रीडम नाम की कोई चीज है ही नहीं। माइंड कंट्रोल फैसिलिटी सब पे नजर रखी हुई है और हर जगह एम्प्लॉयज के नेम है। स्टैनली का तो नंबर ही भूल गया, नेम नहीं है नंबर है एम्प्लॉयज के। एम्प्लॉय 326 342, एक है कहीं पे लिखा होता है एम्प्लॉय फायर्ड। फायर्ड क्यों किया उसे? अब ऐसा तो है नहीं उससे वो बटन दबाने वाला भी काम नहीं हुआ, वो देखो एक फायर्ड कर रखा है इन्होंने। ओके, This mind control facility, it was too horrible to believe it couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Man. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. ओह, माइंड कंट्रोल स्टेटस ऑफलाइन हो गया, इसलिए स्टैनली के पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया कि उसे क्या काम करना है, और वो बैठे बैठे परेशान होकर खड़ा हुआ कि चल देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे पास। और इंस्ट्रक्शन क्या, माइंड कंट्रोल, ये खाना पीना सोना जागना सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, ये अभी बताया इसने। माइंड कंट्रोल्स आइडल अवेटिंग इनपुट। ओके, सिस्टम And when पावर। at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. कोर्स टू एंड टू दिस हॉरिबल प्लेस, मतलब सिस्टम पावर हो क्या, मर गए क्या हम?
इंसेप्शन चल रहा था भाई, ये सपना था और अब जागेगा and स्टैनली। a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes! He had won! He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. जाने तो दे यार। अब बढ़िया बात बताई है इसने, सब हमें कंट्रोल Stanley करके felt रखे the हुए cool थे। breeze upon his skin, मुझे भी बोलने the दे यार, feeling of मेरे liberation, स्ट्रीम है। the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. लेकिन अब मेरे पास गेम का कंट्रोल नहीं था। जैसे ये बाहर निकला मेरे पास कंट्रोल खत्म हो गया गेम का। मैं माउस हिला रहा हूँ। Please never the bro